Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज रो टॉपिक रे हमें पढ़िबा अबाउट द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड वेव फ्रंट एंड आल्सो द कोहेरेंट वेव्स। सो जिते आम मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस देखुचु सब जिते एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट अच्छी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस दे एक्चुअली इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ वेवलेट्स। एटी वेवलेट्स कहले आम कौन बुझा देख जमती गोटे ड्रप रो बहुत छोटिया पार्ट को ड्रपलेट कह जाए माने जल कणिका। सिमिलरली गोटे वेव रो बहुत ही छोटिया पार्ट को आम कहवा वेवलेट बोली। सो दीज वेवलेट्स व्हिच फुलफिल द रिक्विजिट कंडीशन एज स्टेटेड अर्लियर माने एमान को भितर एबे रिकॉम्बिनेशन हबो से रिकॉम्बिनेशन टा कंस्ट्रक्टिव हे पारे डिस्ट्रक्टिव हे पारे इन ऑर्डर टू गिव राइज द interference pattern. So various experiments can be classified into basically two categories. दुईटा way रे हमें interference पाई परिबा division of amplitude and wavefront. Let us first discuss the division of wavefront. So in this case the wavelets which come from different parts of same wavefront हैला गोटे ही wavefront रू अलगा अलगा तार जागा रू wavelets बाहरिबो and they are made to travel along different paths. After that they are recombined in order to give rise to the interference pattern. So since the wavelets originate from the same wavefront मूल सोर्स टा केवल गोटे ही wavefront तेणु करी एबे एमान को भितरे फेज डिफरेंस टा आइदर कांस्टेंट रहिबो और समान ही रहिबो तेणु करी द कंडीशन फॉर कोहेरेंस इज fulfilled. So in case of division of wavefront we need narrow source. ओके नेरो सोर्स और पॉइंट सोर्स लाइक और ये स्लिट तुमर हो गला है जोटा कि बहुत नेरो ओपनिंग रथिबो सेही भलिया सोर्स एई जगह रे दरकार। एग्जांपल हे पारे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्लेनेल्स बाइप्रिज्म लॉयड्स सिंगल मिरर ए सब डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कैटेगरी रे आसीबो। सो इन दिस क्लास ऑफ इंटरफेरेंस वी डू नॉट ऑब्टेन कॉम्प्लीमेंटरी पैटर्न्स ए जगह कॉम्प्लीमेंटरी पैटर्न किसी आसीबो नहीं माने गोटे पैटर्न आसिला ताकू कॉम्प्लीमेंट कला भलिया आउ किछि पैटर्न जदि आसुथाय ताहले आमे कॉम्प्लीमेंटरी पैटर्न कहू किंतु ए जगह रे आसीबो नहीं को जगह रे जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट रे आउ टिके जदि आमे डिटेल जिबा व्हेनेवर वन प्राइमरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस टू सेकेंडरी वेव फ्रंट्स ऑन इल्यूमिनेशन ऑफ टू स्लिट्स बाय सिंगल सोर्स देन division of wavefront is obtained. So here we may use reflection, refraction or diffraction in order to divide the incident wavefront into suppose two identical parts. Okay, so division of wavefront can also be used by using a source and its virtual image. गोटे मूल सोर्स आ तार भर्चुआल इमेज सो दुईटा सोर्स एबे हे गला तो तेणु करी जेहेतु तार भर्चुआल इमेज ही अटे तेणु ता भितर एबे आ फेज डिफरेंस टा कांस्टेंट रहइबो और जीरो रहइबो और आमे आ गुटे जिंस करि परिबा यूजिंग टू भर्चुआल इमेज ऑफ द सेम सिंगल सोर्स तो एई जगह रे भी माने कांस्टेंट फेज डिफरेंस समान फेज रहउची। सो थॉमस यंग से यूज कले तांकर जो फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे ही यूज्ड टू स्लिट्स which are illuminated by light through a single slit in order to produce division of wavefront. ता सहित फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म जमती कहा गला लॉयड सिंगल मिरर मेथड इटा होची तमरो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट रो एग्जांपल फॉर ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस। अच्छा, when some random change occurs in the primary wavefront मूल सोर्स जोटा है मूल सोर्स जो वेवफ्रंट ता सेथिरे जदी किछरा रैंडम चेंज देखा गला then it is equally also present in both the secondary waves. So a definite phase relationship is observed in this case. Okay, second category रे आसिला तमरो division of amplitude
देख ये जगह कौन हो ना रु जना पड़ुछि जे एठी वेव फ्रंट रो एम्प्लीट्यूडटा डिवाइड हो जाउछि दुईटा भाग रे। अच्छा जो दुईटा पार्ट्स आसिला दे फॉलो डिफरेंट पाथ्स एंड रिकम्बाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न किंतु ये जगह गोटे ब्रॉड और एक्सटेंडेड सोर्स दरकार पड़ुछि। मन पकाओ डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट रे आमे दरकार करथला गोटे नैरो सोर्स किंतु ठीक तार उल्टा डिवीजन ऑफ एम्प्लीट्यूड रे गोटे ब्रॉड एक्सटेंडेड सोर्स दरकार होछि। सो एटा हला बेसिक डिफरेंस ए दुई भितरे आ गोटे एटा भाइबा क्वेश्चन मध्य। सो एग्जांपल कोन होई पारे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स और न्यूटन्स रिंग्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी आ ता सहित फेब्रिपेरोड्स इंटरफेरोमीटर देन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर आपको या विषय डिटेल मध्य पढ़ा। सो इन दिस क्लास ऑफ इंटरफेरेंस वी एक्चुअली ऑब्टेन कॉम्प्लीमेंटरी पैटर्न्स है। सो गोटे पैटर्न आ गोटे पैटर्न को कॉम्प्लीमेंट करिवो है। एटा केमती कॉम्प्लीमेंट करे ता विषय भी आपको डिटेल पढ़ा। सो देख ये जो दुईटा पार्ट रे डिवाइड हो जाउछि एम्प्लीट्यूडटा सेटा केमती होउछि आमे देखिबा। सपोज वी टेक अ सिंगल बीम ऑफ लाइट है। Now let it be partially reflected or refracted from two surfaces. Now they cover different distances before interfering so as to cause interference pattern. अच्छा जमती डिस्कस कला ये जगह गोटे ब्रॉड सोर्स दरकार पड़ुछि। अच्छा जो एम्प्लीट्यूडटा इंसिडेंट वेव्र ताकू आमे डिवाइड करूछु केमती जे गोटे पार्ट जाउछि रिफ्लेक्शन है कि आ गोटे पार्ट जाउछि रिफ्रैक्शन है कि है। आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ए दुईटा पार्ट पुणी रिकम्बाइन होउछि so that you are getting an interference pattern. So that this type of method is known as division of amplitude. Already ए जो division of amplitude रा example कोई रखी छी thin films, Newton rings, Fabry-Perot and Michelson's interferometer. Okay. आगको बढ़िबा let us see now what are coherent waves. आमे ऑलरेडी जानिछु जे दुईटा वेव को आमे कोहेरेंट केतेबेले कहिबा जेतेबेले ऑब्वियसली सेमानक भितरे एम्प्लीट्यूडटा समान थिबो आ फेजटा समान थिबो किंबा एटलिस्ट नहले कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहिथिबो। आ कोहेरेंट वेव्स ही प्रोड्यूस करिवो तमरो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ए जो सस्टेन्ड वर्डटा आछि ता माने कोन बिकॉज एई पैटर्नटा चेंज हेबो नाही विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और इन अदर वर्ड्स आमे जदि स्क्रीन रे गोटे पॉइंट को देखुछु इट हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी माने अ ब्राइट पॉइंट देन इट विल रिमेन एज द मैक्सिमम फॉर एवर। सिमिलरली जदि सेही पॉइंटटा आमे गोटे स्क्रीन रे देखुछु इट हैज मिनिमम इंटेंसिटी और सपोज अ डार्क स्पॉट देन it will remain minimum forever है। So the coherence of two waves actually signifies the correlation of the two waves. It expresses the ability to depict the phase of the second wave by knowing the phase of the first wave रो आमे phase जदि जानिछु आमे सेकेंड वेव रो फेज को मध्य बाहर करि पारिबा है। ए जो सेकेंड वेव अछि इट नीड नॉट बी अ सेपरेट एंटाइटी एटा तुमरो फर्स्ट वेव संगे रिलेटेड ही रहिबो एंड इट कुड बी द फर्स्ट वेव एट डिफरेंट टाइम और पोजिशन से फर्स्ट वेव को ही आमे जदि डिफरेंट टाइम और पोजिशन रे देखिबा सेटा ठीक तुमरो सेकेंड वेव बढ़िया बिहेव करिवो। सो देखो कोहेरेंस जो अछि इट इज ऑफ टू टाइप्स गोटे हला टेम्पोरल कोहेरेंस आ गोटे हला स्पेशियल कोहेरेंस। तबे मन रख एटा जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज जानी रख जदि एग्जाम रे एटा पढ़िनी ताले लिखिबार किछि आवश्यकता नहीं हैला। सो देखो फर्स्ट हला टेम्पोरल कोहेरेंस। So temporal coherence is defined as the amount of average correlation between the value of a wave and itself माने सही समान वेव रो निज ही सहित रिलेशन टा but they are delayed by time interval at any pair of times. Suppose गोटे wave at a time t1 आउ आफ्टर अ लेटर टाइम सपोज t2 सही समान वेवटा केमती बिहेव करछ ए दुई भितर रिलेशनशिप को आमे temporal coherence कहि परिबा। So it is a type of coherence in which the field at a point at a particular time and at the same point but at a later time how they are related is known as temporal coherence. So it will tell you how monochromatic a light source is. Monochromatic means single wavelength, polychromatic हिथिले multiple wavelength. So यार physical significance कोन देखो it will show you how well a wave can interfere with itself but at a different time. Okay निज ही सहित गोटे wave interfere करछि but at a
different time. So the coherence time jodi ame dekhiba, it is defined as the delay over which the phase or amplitude changes by a significant amount. अच्छा ये जो डिले टाइमटा आसुची सपोज यार वैल्यू होची 0 टाइम इंटरवल टोटली डिले हैनी दैट मीन्स द डिग्री ऑफ कोहेरेंस इज वेरी मच परफेक्ट. अच्छा यार वैल्यूटा ये जो डिग्री ऑफ कोहेरेंस रो वैल्यूटा डिक्रीज करी करी जीवो एज द डिले पासेस ओवर द कोहेरेंस टाइम को भी मध्य डिले टाइमटा पास करिगला ता माने एबे डिग्री ऑफ कोहेरेंस रा वैल्यू कमी कमी जीवो. लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ टेम्पोरल कोहेरेंस. फर्स्ट हैला white light आम जानी इट इज ए पॉलीक्रोमैटिक लाइट दैट मीन्स मल्टीपल वेवलेंथ होला. बाघ निश हनाला और भाइब्योर इट composed of 7 colors. से जहाँ भी white light having a broad range of frequencies is a wave which changes quickly in both amplitude and phase and it has also short coherence time. Second, monochromatic wave which is perfectly correlated at all the time delays. A third case रे pulse माने एटा बहुत शीघ्र माने चेंज हुए फ्लक्चुएट हुए with respect to time. So pulse or wave packets of waves also have short coherence time because एमानकर जो amplitude of phase अच्छी है of these two are changing very fast. Okay. Secondly एबे हमें देखिबा spatial coherence. देखो it is defined as the property which describes the ability for 2 points in space in the extent of wave to interfere when averaged over time. माने in other words spatial coherence is the cross correlation between 2 points in a wave for all time. ये जो cross correlation आसिला mathematically हमें कहिबा cross correlation means it is an amount of similarity of the two waves as a function of delay of one relative to other. अच्छा ये जो spatial coherence देखुचु for perfectness the wave is a wave in which the value of amplitude is single valued. Okay, one value of amplitude रहिबो over infinite length. Example कौन ही पारे? First है गोटे plane wave having infinite coherence length. Secondly, ordinary light passing through a pinhole or slit. Thirdly, a wave with changing wavefront or finite coherence length. Okay, so एबे आको बढ़िबा सेही समान जो स्पाशियल और टेम्पोरल कोहेरेंस को आ टिके आमे एग्जांपल वाइज बुझिबा को चेष्टा करिबा. देखो आउ थरे कहूची दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस. एग्जाम रे जदि एटा पढिनी ताले लिखिबार किछि आवश्यकता नाही. So देखो consider an ideal situation in which we have taken a source of light which is emitting an infinitely long monochromatic plane polarized light. अच्छा this is a sinusoidal wave train as shown in figure. So एठी देखो फिगर रे एई भलिया तमरो sinusoidal wave train जाउची हला. Now एठी जो dotted line तमे देखि परथबो these are the dotted lines, these are indicating the plane wavefronts. अच्छा separation between two crests, this is the separation, it is nothing but the wavelength lambda of the wave. So let us now consider 2 points x1 and x2. Okay, these are spaced by any distance x along any ray. Now let us take delta phi to be the phase difference between the 2 points. Now in this ideal situation जदि आम जो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई नहीं बिटवीन द पॉइंट्स x1 एंड x2 इट डू नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आइडियल सिचुएशन रे एंड वी से दैट देयर एग्जिस्ट परफेक्ट टेम्पोरल कोहेरेंस. इन अदर वर्ड्स व्हेनेवर बिटवीन एनी टू फिक्स्ड पॉइंट्स जदि पॉइंट दुईटा फिक्स्ड अच्छी द फेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. ओके, सो वी से टेम्पोरल कोहेरेंस एग्जिस्ट. तापरे ये जो टेम्पोरल कोहेरेंस को आमे टेस्ट भी करि परिबा बाय मेजरिंग द फेज डिफरेंस एट वन फिक्स्ड पॉइंट एट एनी टू इंस्टेंट. जमती आमे ऊपर पढ़िला t गोटे हला टाइम आ गोटे टाइम सपोज t प्लस डेल्टा t एंड इफ दिस फेज डिफरेंस रिमेन्स constant, that means remains same, then it does not change with respect to time and temporal coherence is said to be established. Okay,
So ये है तुमरो temporal coherence. Now suppose we consider a plane which is perpendicular to the direction of a ray at any distance from the aperture. Acha, let us consider any two fixed points in this plane having a phase difference delta phi between them. Acha, if this phase difference remains constant with respect to time, ताहले हमें कही परिबा that perfect spatial coherence exists. Okay, but in actual situation, no source of light emit infinitely long monochromatic wave train. Actually कौन हुए, they emit wave trains which are finite in length. ताको आमे कहू कौन ना coherence length है. So the light from real source have sudden phase change due to lack of correlation between various atoms emitting the light. अच्छा, ये जो लाइट ऑब्टेन कला आमे फ्रॉम रियल सोर्सेस, दे कंटेन अ सीरीज ऑफ हार्मोनिक वेव ट्रेन्स which are characterized by the coherent time or coherent length है. यही coherent length को आमे मेजर मध्य करि परिबा. So it is nothing but the average distance over which no sudden phase changes takes place. It is known as coherent length L0. So this is nothing but the product of velocity and time है. C हेगला velocity of light, T0 हेगला coherent time. अच्छा, as light is obtained from real sources is not perfectly monochromatic, so एटा हैला तमरो finite line width possess करछि और आमे कहि परिबा जो band width टा होछि एठी finite. अच्छा, suppose delta omega हेगला range of frequency emitted by the light source, ताहले हमें लिखि परिबा delta omega equal to 2 pi by t0, 2 pi by time period. अच्छा, एठी delta omega को हमें replace करि परिबा 2 pi delta f, काहे कि omega equal to 2 pi f एटा हमें जानिछु. ओमेगा हेगला एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ हेगला फ्रीक्वेंसी. सो एठी 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हेगला और डेल्टा एफ इक्वल टू 1 बाय t0, सो दैट द कोहेरेंट लेंथ बिकम्स L0 इक्वल टू c बाय डेल्टा एफ. अच्छा, एठी डेल्टा एफ जो अछि ताको हमें रिप्लेस करि परिबा लाइक दिस by putting f equal to c by lambda, so that df equal to minus c by lambda square into d lambda. Okay, so coherent length हेगला L0 equal to c lambda square by c d lambda. एठी c और c तळे ऊपर कैंसिल हेगला, that means L0 equal to minus of lambda square by d lambda, तार actual value टा आसीगला एठी हैला. Let us see what are the points to remember. So देखो एटा तमरो भाइबारे भी क्वेश्चन पड़ी पारे हैला. इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो फ्रिंज विजिबिलिटी अच्छी, इट इज ए डायरेक्ट मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ स्पाशियल कोहेरेंस हैला. आमे जानिछु यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हुए हैला. अच्छा, इन केस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर ए जगह डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हुए. So here the fringe visibility gives the measure of degree of temporal coherence हैला. यंग्स डबल स्लिट रे spatial coherence, Michelson interferometer रे temporal coherence. Okay, Thank you.